बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जाना, जहां कंप्यूटर का यूज होता है। आज हम लोग जानेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। एज यू ऑल आर फैमिलियर विथ Mobile computing is the human computer interaction by which a computer is expected to be transported during normal usage. Mobile computing involves mobile communication, mobile hardware, and mobile software. It also means being able to use a computing device even when you are using your mobile and therefore changing location. Portability is one aspect of mobile computing. Mobile computing is a variety of wireless devices that allow people to connect to the internet, providing wireless transmission to access data and information from wherever they are. Many types of mobile computing devices have been introduced since 1990, including the following: Personal Digital Assistance (PDA), a small, usually pocket-sized computer with limited functionality. Next, a smartphone has a wide range of features and installable applications. And next one is tablet computer, does not have a keyboard and is shaped like a slate or a paper notebook. As you all are familiar with mobile devices, it is a small computer. We can use this technology to perform all types of work that you perform in a computer system. And the advantages of mobile computing, we can easily carry from one place to another, and it provides wireless transmission to access data and information. मोबाइल कम्युनिकेशंस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, इसकी मदद से आप इजीली सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं जो आप कंप्यूटर में करते हैं. एंड द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोबाइल कंप्यूटिंग, इट यूजेस अ वायरलेस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. With the help of internet, we can access all those things that we access on our computer system. Some examples here given. PDA, Personal Digital Assistance, is a small pocket-sized computer with limited functionality. इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं compared to computer system. And next, a smartphone has a wide range of features and installable applications. आपके स्मार्टफोन्स में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क. एंड द मोस्ट advanced features is of installable applications. We can easily install any type of applications that we have to work. Next, tablet computer does not have a keyboard and is shaped like a slate. जो हमारा टैब मोबाइल है या टैब कंप्यूटर है जो
सेम एज स्लेट, जिसे हम पेंसिल से लिखते हैं, या आपका पेपर नोटबुक की तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। मोबाइल टैब का या टैबलेट कंप्यूटर भी कर सकते हैं उसको। दीज आर द फीचर्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक रिसर्च। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट। Scientists use documentation. For example, scientists use computers to view images from space and to publish information on their recent research. Computers are also used for scientific research. In space, it is used to view images and publish information ऑन देयर रिसर्च। जो भी रिसर्च किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, और जो नए जानकारी उनको अवेलेबल हुआ है, जानकारी प्राप्त हुआ है, उसको ईजिली पब्लिश कर सकते हैं, ईजिली सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट। इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस you can use computers to organize information by storing and maintaining records. Computers are also used for providing services to citizens. As you know that government organizations also uses a computer for providing their services to citizens, and it stores all the informations regarding services or information about citizens. Next, publishing. Computers are used to design any type of publication ranging from simple newsletters to magazines, marketing materials, books, newspapers. Most of the publishers also have an electronic versions of their magazines and newspapers. E-books, electronic books have become widely prevalent. Publishing industry also uses a computer to publish simple newsletters, magazines, marketing materials, books, or newspapers. Also, nowadays it is used for e-books or e-learning, e-magazines with the help of computer and internet. Next one is daily life. We operate washing machine, microwave oven, and many other products using software. Moreover, we can store all the information about our important work, appointments, schedules, and list of contacts in a computer. Computer is therefore playing a very important role in our life, and now we cannot imagine the world without computers. It is very useful. As you aware that we operate washing machine, microwave oven and many other products using software. सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग बहुत सारे मशीन्स को यूज करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, etc. एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग computers for schedules and list of contacts. Computer is therefore play a very important role in our life, and now we cannot imagine the world without computer. आज
हम लोग बिना कंप्यूटर का अपने लाइफ का कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे चारों ओर जितने भी वर्क हो रहे हैं आज के समय में सारे कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट, relevant knowledge. As automobile such as car or a van is available in different models and colors, but its essential components remain the same. All automobiles have an engine, a body and wheels. Similarly, computers are available in various sizes and shapes, but they all have common components that work in the same manner. These essential components of a computer are hardware and software. In this lesson, you will learn about common computer technologies such as hardware, software, data and network. As you know that, जैसा कि आप जानते हैं, in automobile such as car, van available in different models and different colors. ये अलग अलग कलर अलग अलग मॉडल में हमारे पास अवेलेबल है। All automobile have an engine, a body and wheels. जैसा कि आप जानते हैं सारे ऑटोमोबाइल्स में इंजन होते हैं, बॉडी होते हैं एंड व्हील्स होते हैं। Similarly, कंप्यूटर आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर डिफरेंट शेप और साइज में अवेलेबल है, बट दे ऑल हैव कॉमन कंपोनेंट्स दैट वर्क इन द सेम मैनर। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो साथ में मिलके साथ में काम करते हैं। द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप जानते हैं कंप्यूटर का जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। स्टूडेंट्स, you read all the topics that discussed very carefully, and if you have doubts regarding any topics that discussed, you can ask. Thank you.